Hi, hello, namaskar. Welcome to OPSC Achievers Academy. So, in today's class, we will discuss about some of the aspects how to write an philosophical essay. As you know, in 2024 mains, all the essay were philosophical in nature. Pasta essay पढ़थिला out of 5 you need to write any 2 essay and surprisingly ସବୁ गुड़ा ସେମାନେ philosophical essay पचारे but 2023 किंबा ता आगुरु एमती होनुथला मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप essay रे काम हो जाए जोटा आम जीएस रे पढ़ती कि 5टा 6टा essay हम प्रैक्टिस करी गले जमती एआई हो गला वुमेन एम्पावरमेंट हो गला ठीक अच्छे तापरे एग्रीकल्चर हो गला क्लाइमेट इश्यू हो गला सोशल मीडिया हो गला एमती 5टा 6टा essay आम प्रैक्टिस कर देले तादर ऑलमोस्ट हो जाए बट 2024 रे देयर इज ए मेजर शिफ्ट and to tackle that we have introduced a 40 essay series okay गोटे आम 40टा essay रो गोटे compilation तैयारी करछु एटी तुम देखि परतो 35 philosophical essay along with that we have also provided 5 objective essay excuse me 5 objective essay also we have included in the program fine so let's start how to write a philosophical essay and after that we will come here and discuss about other things ठीक है these are some of the topics 35 essay so first of all you should know how to write a philosophical essay the very first thing that you should understand and you should always remember is that do not write a philosophical essay as a philosophy your optional might be philosophy might not be philosophy बट जो आम एसे लिखुं फिलोसफी को फिलोसफी हिसाब से लिखवानी एमती कले आमको बहुत कम मार्क मिल रादर राइट फिलोसफी आज लाइफ आज सोसाइटी आज गवर्नेंस जहाँ फिलोसफी देती आम लाइफ से कनेक्ट करवा हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी एंड व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस ताहले आम फिलोसफिकल एसे को ठीक रे आम हैंडल कर परिबा सो लेट्स स्टार्ट with the basics how to write a philosophical essay most aspirant fear because they think they need specialized knowledge of philosophy to write philosophical essay गोटे मिसकनसेप्शन अच्छी पिला भितर कि philosophical essay लिखा गले आम फिलोसोफर को जानथिबा दरकार ता विषय स्पेशलाइज्ड नॉलेज थिबा दरकार otherwise we won't able to write a good essay in philosophical context in reality philosophical essays are simple discussions about human life the values society and governance जहाँ philosophical essay रो topic थिबो that we need to connect it with human life with the values of the value system तापरे हेगला तमरो society and governance to test your ability to think deeply connect ideas and present balanced argument सबु बेले आइडिया को आम कनेक्ट करके लिखा पड़ो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इट शुड बी बालान्सड आम कौन भी साइड को जमी बायसनेस न होइकी लिखा दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मु तुमको जो ऑब्जेक्टिव एसे लिखापी भी गोटे लेक्चर नहीं से भी मुझे वी शुड ऑलवेज प्रेजेंट बालान्सड आर्गुमेंट कौन भी एक्सट्रीमिटी इज ऑलवेज अवॉइडेड इट शुड बी अवॉइडेड कौन भी एक्सट्रीम एंड को आम नबानी सब आम बालान्स रखा सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द आर्गुमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स बट द गोल्डन रूल philosophical essay should connect with real life with society with governance and also has a future vision
and you should always remember that philosophical essay को केबे abstract world रखियोनी, rather you should connect with real life, सब बेले real life सहित connect कर लिखियो, so that तमे भी जानी परिवो in which angle you are writing, and it will definitely fetch you a good mark. यदि आम abstract world रखिबा ताहले आमे ताकू ठीक रे ना तो कनेक्ट करि परिबा, ना तो भलो एग्जांपल दे परिबा, ना तो हमको भलो मार्क मिलिबो. I have talking with some of the students जो मैंने बहुत भल स्कोर करते 140 135 तांकर भी एथर ड्रास्टिकली मार्क रिड्यूस होइछि बिकॉज ऑफ द फिलोसॉफिकल एसे. कौन प्रोब्लेम है, दे आर प्रिपेयर्ड विथ ऑब्जेक्टिव एसे पे से माने फुल्ली प्रिपेयर थिले, एंड जो मैंने 135 रखी जदि सेम पैटर्न रे एसे पढ़ी था से माने 155 प्लस मिनिमम स्कोर करते, बिकॉज दे प्रिपेयर्ड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन से माने फुल्ली प्रिपेयर्ड होगी बहुत बढ़िया रे प्रिपेयर करके जाइथिले. बट ओपीएससी जमी क्वेश्चन पचारला, जमी फिलोसॉफिकल एसे को जंप कला, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तुमको रूल शिखी जावाक पड़ो, एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल इटसेल्फ तुमको रूल अप्लाई करिकी आंसर करिया पड़ो इफ एनी क्वेश्चंस कम्स आउट ऑफ द बॉक्स. जदि फिलोसॉफिकल एसे जमी आम ये 35 टॉपिक देते, बट इट इज नॉट गारंटेड कि आ भर भी पड़ो, चांसेस आर वेरी हाई कि क्वेश्चन आ बाहर पड़ो. सो इट इज नॉट कि आम तुमको 35 एसे दूचे ये पढ़ी जाओ, इट विल गिव यू ए ब्रॉड फ्रेमवर्क, तुमको गोटे फ्रेमवर्क दब, तुम ये 35 एसे पढ़ला बुझीपर कि हाउ टू राइट द एसे, दैट इज इट, एंड हाउ टू यूज ए सिंगल एग्जाम्पल इन मल्टीपल वे, सेटा देखापी आम ए 35 एसे कंपाइलेसन आनीचु. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1. फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू डिकोड द टॉपिक, read the statement 3 to 4 times and ask 3 questions. जमती एग्जांपल देजी, a ship is in harbor is safe, a ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. तो आम आगे 3 ରୁ 4 थर पढ़ा, आम बुझा चेष्टा करिया. 3टा क्वेश्चन पचारे कौन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग, लिटरली से कौन कहना चाहूँगी. सेकेंड, व्हाट इज द हिडन मेसेज, व्हाट इज द हिडन मेसेज, एंड थर्ड इज व्हाट इज रिलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड. कारण लिटरल मीनिंग रे सब बेले आम एसे लिखिपारानी, आमको तार हिडन मेसेज कौन अच्छी से फाइंड आउट करा पड़ो, एंड फाइनली व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक इन टुडेज रियलिटी. लिटरल मीनिंग कौन हम, ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर. लिटरल मीनिंग कौन, लिटरल मीनिंग है ए शिप इज सेफेस्ट इन द हार्बर. हार्बर माने बंदर अच्छी एटा, ठीक, दिस इज द ओके एटा कोस्ट लाइन, ये गोटे बंदर, ये गोटे तुम शिप लगी, ठीक, शिपटा ये कौन अच्छी सेफ अच्छी. जदि शिपटा आगू को बढ़ो, जदि समुद्र भितर को जीव, मे भी बात्या आस बन्या आस बुड़ी जापे, ठीक अच्छे. बट शिपटा कौन तैयारी होता कि यही बंदर लगिक रही ना, शिप्र किसी अलग किसी कम था कि इट शुड फेरी पिपुल, से लोक नहीं कि गोटे जगह आउ गोटे जगह जीव, गुड्स मुवमेंट रे हेल्प कर, ये तो तैयारी होता ना, ना ताको तैयारी कराइला कि ताको बांधिकी घरे रखा, माने बंदर रखा. लाइक यू हैव ए बाइक, आम जानते कि बाइक चलेले देयर इज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, एंड एक्सीडेंट देयर इज नो कॉज. बहुत सारा एक्सीडेंट अच्छी जो किसी कज न थाए, दैट इज जस्ट एक्सीडेंट. तो गाड़ी चलेले एक्सीडेंट होवार चांसेस अच्छी, आम कह ठीक अच्छे गाड़ी चलेले जब एक्सीडेंट होवार अच्छी ताले बाइक आम किणी आनले घर रखीदे. बट आम कौन घर रखापे बाइक किणी आनी कि, बाइक आनी आमको मुवमेंट करार अच्छी. लेट सपोज कि मत कॉलेज जीवार अच्छी, मत ऑफिस जीवार अच्छी, मार्केट जीवार अच्छी, सब आड़ को मत हेल्प कर, मु बाइक नहीं आसती, सो दैट के आई कैन ट्रावेल फ्लो, माने इजिली मुझे ट्रावेल करी. तो सिमिलरली जो शिप कथा कही, शिपटा हार्बर रे सेफ बट हार्बर रे रही तैयारी है, इट लिटरल मीनिंग. बट एतिक बुझे आमको हेनी, वी नीड टू आस्क द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हिडन मेसेज. हिडन मेसेज कौन, ह्यूमन बीइंग शुड नॉट रिमेन इन देयर कंफर्ट जोन. मु घरे अच्छी
ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ଅଛି, ବାପା ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋର କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ମୁଁ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିବି, ଆଇ ୱୋଣ୍ଟ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ମୋ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରହିବି। ବଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ कि मत कंफर्ट जोन भर रही अच्छी, मत ठीक सका 6टा है मत मैंने उठार अच्छी, 7टा है मत खाइबार अच्छी, 8टा है मत गाधेबार अच्छी, 9टा है पूजा करार अच्छी, 10टा है ब्रेकफास्ट सेकेंड ब्रेकफास्ट करार अच्छी, 11टा है खाइबार अच्छी, फिर 12टा लंच कर शोजार अच्छी, 4टार फिर उठिक चाह पीबार अच्छी। इज इट द गोल ऑफ लाइफ? इज इट द गोल ऑफ लाइफ? कहीं मोर लाइफ तो कंफर्टेबल चलती कले, बट इट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। वी शुड टेक सम इनिशिएटिव, आमको किसी इनिशिएटिव नवाक पड़ो। वी शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, फाइन हो भी पारे न भी हो पारे, दैट इज 50-50 चांसेस, 50% चांस अच्छे हम, 50% चांस अच्छे हेनी, जदि न हम देन लाइफ वोंट एंड हियर, वी विल डू समथिंग माने विल डू समथिंग मोर देन दिस प्रिपरेशन, ताकू छाड़ी आम आउ किसी एक्सट्रा कर आउ किसी भल भी कर मोर केवल सिविल सर्विस रे ही हम सेमती किसी ना। सो वी हैव टेकन ए कैलकुलेटेड रिस्क, विल ट्राई फॉर 2-3 इयर्स, है तो है ना आम अलग किसी स्टार्ट करवा। सो दिस इज ए कैलकुलेटेड रिस्क। जदि मुझे भावीदेवी ना मत सिविल सर्विसिंग करार अच्छी, जदि सिविल सर्विस हम मुझे किसी करी, देन दैट इज ए वाइल्ड रिस्क एंड दैट इज नॉट ए गुड साइड। तो आमको कैलकुलेटेड रिस्क नहीं कि जिनस को चिंता करा पड़ो, फाइन। तो हिडन मीनिंग हो कि ह्यूमन बीइंग शुड नॉट रिमेन इन देयर कंफर्ट जोन, से माने कंफर्ट जोन बाहर को आसिक किसी इनोवेशन करिया दरकार, किसी रिस्क नवा दरकार, कैलकुलेटेड रिस्क नवा दरकार, सो दैट आमर प्रोग्रेस हो पार। जदि आम एडमिनिस्ट्रेटिव मीनिंग कथा कहवा, इट टॉक्स अबाउट प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड नेशन बिल्डिंग रिक्वायर करेज एंड कैलकुलेटेड रिस्क। केतेक जगार जो मिनिस्टर माने अच्छी, दे नीड टू टेक हार्डेस्ट डिसीजन, बहुत हार्ड डिसीजन ताको नवा को पड़े बेले बेले, दैट इज नॉट पॉपुलर, दैट इज नॉट पॉपुलर, बट स्टिल दे नीड टू टेक द रिस्क बिकॉज दे नो जदि आम एबे यही कामटा करवा आगो को आमको हेल्प कर। सो दैट इज ए कैलकुलेटेड रिस्क दे हैव टू टेक। तुम जो ऑफिस रही बस, तुम ऑफिस जो तुम एज्यूम कर ओके यू विल ऑक्यूपाई द ऑफिस, से बहुत सारा जिनस थी जोटा तुमको लगुव कि इफ आई विल डू दिस इट विल सॉल्व ए ग्रेटर पर्पज, गोटे बहुत बड़ पर्पज को सॉल्व कर। आउ गोटे ऑप्शन थी कि लोक मानू सांगे सांगे खुशी होते, लोक मैंने सांगे सांगे जमी एमर इलेक्शन चली कौन हो इलेक्शन बेले बहुत सारा स्कीम्स आसूँ, फ्री बीज दिखाई जाऊँगी, लोक मैंने खुशी भोट दे देते, बट आमर जोटा एक्चुअल डेवलपमेंट होगा कथा से हो पारनी। 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज किसी डेवलपमेंट हुए, बट कलेक्टिवली जब से 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज दैट विल हेल्प अस टू बिल्ड द नेशन। आम जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करवा दैट विल बेनिफिट एवरीवन, बट आमर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केमती हो पारुनी। सो नेशन बिल्डिंग we need to take, or the leader, the bureaucrats to show courage and take calculated risk. ठीक अच्छे, a ship in harbor is safe but that is not what the ships are built for। ये फास्ट डिकोड कले टॉपिक को। सेकेंड आम आसवा आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। यहाँ हूँ बेस्ट वे जे तुम बुझीपारना सब बेले तुम कीवर्ड सर्च कर कीवर्ड को तुम सब लिखिक रखुव। ओके गोटे तुम रफ पेज करी कीवर्ड को लिखिक रखियो कि क्या मतलब डिस्कसन करार अच्छी। व्हाट इज द कीवर्ड हियर? फर्स्ट कीवर्ड इज शिप, सेकेंड कीवर्ड इज हार्बर, थर्ड कीवर्ड इज सेफ्टी, फोर्थ इज रिस्क, फिफ्थ इज पर्पज, तापर एक्सप्लोरेशन, तापर करेज आउ ग्रोथ।
सिप होगला गोटे हार्बर होगला गोटे सिपटा हार्बर अच्छे ना दीज आर कीवर्ड्स सेफ्टी जदि आम मुव न करवा ताले सेफ हम दैट इज सेफ्टी रिस्क आम जदि से बाहर की फेरी को लेकिन जावा दैट इज रिस्क दैट इज ए पर्पज आम कहीं सिपटा को तैयारी करते देयर मस्ट बी सम पर्पज देन एक्सप्लोरेशन जदि सिप गोटे जगह आ गोटे जगह जीव विल एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटी न्यू प्लेस देन करेज करेज इज नीडेड ए समुद्र पार होगापी सिप्रे करेज भी तो दरकार ना एंड लास्ट इज ग्रोथ जदि आम सिप जो तैयारी करते जदि से डायरेक्शन यूज करवा ताले आमर ग्रोथ भी हम फाइन दीज आर द कीवर्ड्स दिस कीवर्ड विल जनरेट आइडियाज फॉर एंटायर एसे तुम ये भी कीवर्ड को लेकिन तुम लिखिपर थर्ड थिंग इज मूव फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू प्रैक्टिकल सब एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड रु आमको रियलिटी को आसक पड़ो सो दैट आम एसे को परफेक्टली कैच करके लिखिपर द बिगेस्ट मिस्टेक इन फिलोसॉफिकल एसे इज राइटिंग ओनली कोटेशन और थ्योरी सी तो गोटे देला द शिप इज नॉट द शिप इन हार्बर इज सेफ बट इज नॉट द शिप्स आर बिल्ड फॉर तो आम ता तले कोटेशन लिखुच तुम ता तले कौन कर थ्योरीज लिखुच इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प फिलोसॉफिकल एसे रे यू शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम कोटेशन जदि तुम ऑब्जेक्टिव एसे अच्छी इट इज ए गुड आइडिया टू स्टार्ट विथ कोटेशन पोएम कर बट फिलोसॉफिकल एसे रे तुम सी गोटे ऑलरेडी कोटेशन देती तुम आउ गोटे कोटेशन माने फेर लिखुच दैट विल क्रिएट अननेसेसरी माने जोटा कौन कह आम जोटा गोटे कोहेरेन्स होगा कथा से अननेसेसरी डिस्टर्ब कर माने सी गोटे कोटेशन देला तुम आउ गोटे कोटेशन लिखल देयर माइट बी चांसेस कि मीनिंग ही चेंज हो तो यू शुड अवॉइड कोटेशन स्टार्टिंग कोटेशन दबा बिल्कुल दरकार नहीं इंस्टेड ब्रेक द आइडिया इनटू रियल लाइफ जो पचारची ताकू रियल लाइफ से कनेक्ट करी तुम एनेक्डोट वगैरह दे परिवो हाउ डज इट अप्लाई टू इंडिविजुअल जमी मुझे कहली कि इंडिविजुअल केमती आम बाइक गोटे किଣିଥିଲେ बट बाइक आम घर रखानी आम सब आड़ को लेकिन जावा बट जो आम नहीं जावा वी शुड टेक सम प्रिकॉशन हेलमेट पिंधा स्पीड लिमिट को कंट्रोल करवा गाड़ी को माने कौन किसी इंटरवाल सर्विस करवा मैं गाड़ी कंडीशन ठीक रखा ट्रैफिक नियम को माने वी शुड ओबे द ट्रैफिक लॉज ताहले आम जो गाड़ी किଣିଥିଲେ से पर्पज विल बी फुलफिल्ड सेकंड अप्लाई टू सोसाइटी सोसाइटल एंगल आगे तुम केमती अप्लाई कर चिंता कर सोसाइटी में केमती अप्लाई करी सोसाइटी किसी गोटे जिन स्कूल गोटे तैयारी कराला ओके गोटे स्कूल तैयारी कराला स्कूल कौन हवा कथा पिला पाठ पढ़ाया कथा बट लेट सपोज इट इज ऑक्युपाइड सम एंटी सोशल एलिमेंट तो आम कौन कह आउ कह कि नेक्स्ट जगह भी आगे गोटे स्कूल करानी स्कूल कले एंटी सोशल एलिमेंट नहीं जी तो सोसाइटी केमिति आपको आम अप्लाई करवा देन हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू गवर्नेंस डिफरेंट एस्पेक्ट रे यही कोटेशन रु आम केमिति अप्लाई करके देखा एंड हाउ टू अप्लाई दिस इन नेशन बिल्डिंग सोसाइटी रे केमिति हम सोसाइटी रे ठीक अच्छे गोटे सोसाइटी अच्छी सोसाइटी रे तांकर लेट सपोज प्रति वर्ष से माने किसी 5000 रुपीज कलेक्शन करती इच मेंबर तो 100 जन अच्छा ठीक तो के 5 लाख टका है गोटे ग्रुप गोटे मीटिंग बसला कि आम कौन करें 5 लाख टका गोटे ग्रुप कहले कि आम भोजी भात कर खाइबा गोटे ग्रुप कहले ना ना गोटे काम करें पिकनिक जावा गोटे ग्रुप कहले ना आम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा लाइक वी विल क्रिएट सम लाइब्रेरी विल क्रिएट सम रीडिंग रूम विल क्रिएट सम ओके सम बेसिक फैसिलिटीज फॉर द पीपल तो अलग अलग आइडिया आसला ना अलग अलग आइडिया आइला तो यही जे लीडर अच्छी लेट सपोज 100 जन भितर 50 जन कहते कि आम करवा आम पार्टी करी खाईदे ठीक ये जन कहते 50 जन कहते कि आम पार्टी करी पैसा माने जो कलेक्शन होती आम खाइबा 80 जन कहते ठीक है जब पार्टी कर न कर भी आम चलो आम पिकनिक जावा 80 जन कहते आ 20 जन कहते कि आमको कौन करा पड़ो
आमको ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे डेवलपमेंट करार अच्छी लीडर देख लीडर पाखे दुटा वे अच्छी नेक्स्ट इयर तार इलेक्शन अच्छी सी जदि यही 20 जन को हेल्प कर माने 20 जन कथा शुण माइट भी 80 जन ताको भोट न दे पारे से हारी पारे बट से जदि यही कथा शुणुची तार जो से लीडर होगी आसला कि डेवलपमेंट कराला से आस्पेक्ट ही मैंने खत्म हो जाऊँगी ठीक अच्छे लेट सपोज 5,000 तुम हटे दियो लेट ये मैंने चिंता कर सरकार 40 लाख टका देती 40 लाख रुपीज देती केत जन लोक रोच 100 लोक रोच सरकार देला 40 लाख टका कि गोटे गाँव में तुम डेवलपमेंट करार अच्छे तो किसी लोग कहले ठीक अच्छे आमको डिवाइड कर दियो पैसा कि जन कहले ना पिकनिक करवा पार्टी करवा 80 जन कहते 20 जन कहते ना ये जो 40 लाख मिली आमको कौन करार अच्छी बेसिक अमेनिटीज वगैरह क्रिएट करार अच्छी तो ये लीडर तापर दुटा ऑप्शन अच्छी आइदर सी बेसिक अम्यूनिटी क्रिएट कर जो लोक मैंने पसंद न करें बट लोक पसंद करेंगे कौटे जदि लोक मैंने जहाँ कहते बट एटा से कले से सेफ से जानी मुझे 80 लोक कथा शुणी 100 जन भोटर अच्छा मुझे इलेक्शन जीतीजी बट इलेक्शन जीतला भी मु लीडर जब होती मु कौन आसती कि केवल बारंबार इलेक्शन जीतियापी ना मुझे आसती लोक मान कम करके डेवलपमेंट देवाई जदि मुझे डेवलपमेंट करने आसती आई शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क कि मुझे नेक्स्ट इलेक्शन हार जाई पारे बट स्टिल जो 40 लाख टका सरकार मत देती आई विल इन्वेस्ट दैट 40 लाख रुपीज फॉर क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरी क्रिएशन ऑफ रीडिंग रूम क्रिएशन ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स लाइफ बुझीपार तो ये भी रिस्क नहीं ना जदि कह जितबार अच्छे मत ठीक अच्छे तुम 80 लोक कथा शुण फिर जीतीज बट तुम जो तुम लीडर होती तुम लीडर तो होना ना कि मत बारंबार बारंबार मत जीतबार अच्छे इलेक्शन लीडर होता लोक डेवलपमेंट जे तुम लोक डेवलपमेंट कर नेक्स्ट टाइम जीतिकी भी तुम कौन कर सो सीपटा हार्बर रे सेफ अच्छी बट सीप तैयारी होता सेफ माने सेफ्टी रही रादर ताकू रिस्क नहीं कम करने तैयारी कराइला से जो जीव सीप गोटे लेट सपोज सीप बाहर इंडिया रू जापान जीव इंडियन ओशन पार होगी पैसिफिक ओशन देकी जीव जो जीव से तूफान भी आसपे किसी भी हो पारे ना तो ये जो 80 लोक कथा से न शुण लोक विरोध करेंगे बट दैट इज द पर्पज ऑफ द लीडर बुझीपार यहाँ सोसाइटी गवर्नेंस केमती गवर्नेंस सेमती गोटे ब्यूरोक्रेसी एग्जांपल तुम दे पार ब्यूरोक्रेट अच्छी ठीक ब्यूरोक्रेट अच्छी ब्यूरोक्रेट्स से चिंता कला कि जहाँ भी डेवलपमेंट हम आम डेवलपमेंट आस्पेक्ट करवा ना कि लोक मान खुशी करने कम करवा लोक मैंने प्रेसर पकाते कि ना आमको यहाँ दरकार बट ब्यूरोक्रेसी को फॉर लार्जर गुड ताकू चिंता करके डिसीजन नवा पड़ो यू कैन गिव एन एग्जांपल कि लोक मैंने आसिक कहले कि ये जो मार्केट अच्छी से मार्केटा को ठीक मार्केटा को ये हटे दियो लोक मैंने आसिक कहले कि मार्केटा को ये हटे दियो बट कहीं हटे दियो बिकज तांकर भीतर कॉन्फ्लिक्ट चलती बट से जो ब्यूरोक्रेसी अच्छी से देखियो कि मार्केट इंपोर्टेंस कौन अच्छी किंबा जिते बाली जो सैंड लीज दिया होची लेट सपोज तापर 3टा ऑप्शन अच्छी गोटे ऑप्शन अच्छी सेठिकार जड़े गोटे ओके गोटे लीडर अच्छी एमपी एमएलए सी प्रेसर पकाउची कि यहाँ मोर लोक दि जाऊ आउ गोटे अच्छी लोएस्ट बिडर अच्छी आउ जने अच्छी सार माने सी हूँ से ब्यूरोक्रेट रिलेटिव सी हूँ ब्यूरोक्रेट रिलेटिव तो ये फॉर द गवर्नेंस क्या मिलिया कथा चिंता कल जदि आम चिंता करवा जदि आम एथिकल हवा जदि आम मोराली ठीक हवा चाहिए ताले लोएस्ट बिडर को यहाँ मिलिया कथा जदि से लोएस्ट बिडर को दब ताले दैट मे बी चांसेस कि लीडर तापर रागिबो ताको रागी कोडी ट्रांसफर करदेव चांसेस ऑफ देयर कि ताको से ट्रांसफर करदेव गोटे बेकार जगह को पठेदेव ये तो डर ना चाकरी तो नहीं पारनी जदि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अच्छी चाकरी जावा एत सहज नुहे इवन ओएस भी चाकरी जावा एत सहज नुहे बट ताको ट्रांसफर कर गोटे एम जगह पठेदेवे जो तार किसी कम न
You can take the example of some Rinku Singh in Uttar Pradesh, ताको एमती जगह ट्रांसफर कले तार किसी काम नथिला 5 मास 6 मास दरमा नेला पर से चाकरी छाड़ देला जदि लोएस्ट बिडर को से दउची तार रिलेटिव माने मे बी तार फैमिली रिलेशन भी खराब ही पारे एटा भी खराब ही पारे बट ता काम नुहे कि लीडर को खुशी करिवो सो दैट कि से जो जगह सेट रहिवो ना तो ता काम एटा कि से रिलेटिव माने को खुशी करिवो कौन पे से आस्तिला गुड गवर्नेंस पे आस्तिला तो गुड गवर्नेंस पे लोएस्ट बिडर ओके लोएस्ट बिडर जे माने किछि यदि कंस्ट्रक्शन काम होची सैंड रेल हाईएस्ट हो जस्ट सिंपल मिस्टेक यदि एटा सैंड कथा हम कहबा सैंड माइन कथा ले हाईएस्ट बिडर नॉट द लोएस्ट जे अधिक पैसा दबो सरकार को ताकू बिडिंग दवा कथा कारण अधिक पैसा आसले गवर्नमेंट अधिक किसी काम कर लोक मान वेलफेयर एक्टिविटी कैन बी मोर तो हाईएस्ट बिडर को दवा कथा बट जदि हाईएस्ट बिडर को से दूसरी देर आर चांसेस कि एम रिलेटिव टू लीडर टू जो मैंने अच्छा पावरफुल पीपल से माने तांको पनिश करि पसंद न करि बट सेटा तो तार काम नथिला ना ब्यूरोक्रेसी काम थिला कि गवर्नमेंट को केमिति एफिशिएंटली से चलेइबो गवर्नेंस को केमिति से एफिशिएंट करिवो सो हाईएस्ट बिडर को दब यहाँ ही तार कौन यहाँ ही तार लक्ष्य सिप तैयारी होता रिस्क नापी गोटे जगह आउ गोटे जगह जावाई तो सहीटा सी कर ना सी आगे खुशी कर खुशी कर नो सिमिलरली नेशनल बिल्डिंग लेट सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकू वर्ल्ड बैंक रु मिली 20 लाख करोड़ रुपीज मिली 20 लाख करोड़ मिली ओके किए देजी वर्ल्ड बैंक देजी टू डेवलप roads in a certain state किसी पैसा ताकू वर्ल्ड बैंक देजी कि गोटे पोरेस्ट स्टेट बिहार नहीं जाओ झारखंड नहीं जाओ गोटे जगह सेठी कौन कर रोड तैयारी कंस्ट्रक्ट कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिली बट दैट स्टेट इज ऑल्सो हैविंग इलेक्शन इन द नेक्स्ट ईयर और आम कहीपर इमिडिएटली आफ्टर 6 months देयर इज एन इलेक्शन आफ्टर 6 months देयर इज एन इलेक्शन अच्छी तो गवर्नमेंट कौन करिवो ए पैसाटा को डाइवर्ट करिवो नॉट टू क्रिएट रोड बट इट विल क्रिएट टू गिव फ्रीबीज ओके फ्रीबीज देखी लोक मान से भोट किनिया को चेष्टा करिवो नेशनल बिल्डिंग तो ये पारा ना रादर ये कौन कराइला गवर्नमेंट को ये रिस्क नहीं कि इलेक्शन में भी से हारी पारे बट रिस्क नहीं कि रोड तैयारी कराइला सो दैट यदि रोड तैयारी हम ताल डेवलपमेंट हम गवर्नमेंट जो पोजिशन को आसला से भी तो से वादा करके आसला ना से डेवलपमेंट करना से वादा करके आसला कि मुझे लोक मैंने खुशी करी तो जेहेतु भोट इलेक्शन बाउंड अच्छी तो करा पड़ी बट दैट इज इफ दे आर गिविंग फ्री बीज दे आर डिफिटिंग द वेरी कॉज फॉर व्हिच दे आर इलेक्टेड ठीक अच्छे तो लोक मैंने खुशी कर माने यहाँ कौन सेफ इलेक्शन जीतीज बट ये तो सी आसना ना सी आसले कौन से आसले डेवलपमेंट लोक मैंने पैसा न देकी से पैसाटा रोड कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग रे खर्च करते से स्टेटा आगू बढ़ी था ना कौन हम पैसा दिहला इलेक्शन होगला सरकार से आउ थे माने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी आउ थे सरकार बनला बट लोक मान कौन लाभ है लोक मैंने 10,000 20,000 पाईगले व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट अबाउट द एजुकेशन आज किसी डिफरेंस आसला कि आसलानी तो सम टाइम द गवर्नमेंट नीड टू टेक अनपॉपुलर डिसीजन सम टाइम गवर्नमेंट नीड टू टेक अनपॉपुलर डिसीजन नवा भी दरकार जी लगुच कि यहाँ करने द्वारा स्टेट डेवलपमेंट हम ना कि किसी लोक किसी दिन मुझे पैसा देकी खुशी करदेवी ठीक यहाँ नेशनल बिल्डिंग आस्पेक्ट तो बुझीपार 4टा एग्जाम्पल इंडिविजुअल लेवल ले कौन है सोसाइटी लेवल ले कौन है गवर्नेंस लेवल ले कौन है नेशनल बिल्डिंग लेवल ले कौन है इंडिविजुअल तो आज भी बढ़िया एग्जाम्पल तुम दे पार कि माने तुम किसी भी तुम एग्जाम्पल दियो बाइक दियो पैसा नहीं किसी एग्जाम्पल दियो कि तुम पाखे पैसा थिला तुम ताको बिजनेस से लगेब बिजनेस लगेले तार रिस्क अच्छी तुम कह ना यहाँ आम घरे ही था ठीक तो अलग अलग आस्पेक्ट तुम चिंता करी अलग अलग एग्जाम्पल दे पार फाइन ए फिलोसॉफिकल एसेस शुड रीड लाइक ए डिस्कशन ऑन लाइफ एंड सोसाइटी नॉट ए फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बुक माने जे पढ़ुची ताको लगे दरकार कि ठीक अच्छे ये जो फिलोसॉफी थिला
से ताकू नहीं कि ओके से कंटेक्स्ट रे आमे गोटे स्टोरी पढ़ला बेले लगुच गोटे स्टोरी सरला गोटे स्टोरी स्टार्ट है एमती फिल हवा दरकार कि एटा गोटे डिस्कसन चलती अबाउट लाइफ अबाउट सोसाइटी ना कि फिलोसफिकल टेक्स्ट बुक रे जेमती बोरिंग वर्ड सब थी सेमती लगे जदि जन पढ़ुची ताको इंटरेस्ट आसा दरकार कि ठीक अच्छे मो 1200 वर्ड 1300 वर्ड मु गोटे पिलार पढ़ी ताको सेतिके इंटरेस्ट क्रिएट करिया पड़िबो एंड यू कैन क्रिएट द इंटरेस्ट बाय मेकिंग द examiner to read it like a discussion on life and society. Step 4 कौन है expand it in multiple dimensions. अलग अलग डायमेंशन रे ताको एक्सपांड करिया को पड़िबो जेमति हम देखले गोटे मीनिंग हे गला तापर तार इंडिविजुअल लेवल रे तार इंप्लिकेशन कौन रहिला फैमिली लेवल रे कौन हे परिबो सोसाइटी कौन हे परिबो व्हाट इज द इकोनॉमिकल इंप्लिकेशन ऑफ दिस व्हाट अबाउट द गवर्नेंस नेशन ऊपर कौन रहिबो एंड ग्लोबल रे आरो इंप्लिकेशन कौन एंड फाइनली फ्यूचर विजन तमे सबुतर गोटे गोटे एग्जांपल देला बेलू तमे एटी ऑलमोस्ट 4 टू 5 पेजेस नहीं जीवो ठीक एटी तमे 4 टू 5 पेजेस नहीं कि माने ऑलमोस्ट तमे केते गोटे पेज रे 90 वर्ड रखले 360 400 वर्ड वाला तमे लिख परियो ठीक एति की खाली एस्पेक्ट रे तो 1200 वर्ड को तुमको डिवाइड करके सेमति लिखिया पड़ियो चिंता करिया पड़ियो कौन कौन एग्जांपल हे परियो मीनिंग देखले हमें इंडिविजुअल लेवल रे कौन हबो फैमिली लेवल कौन हम सोसाइटल लेवल कौन हम तो एमती कले कौन हम फिलोसफिकल एसे रे आम बहुत सारा डायमेंशन मिल जाए आमको आमती लगे कि 1200 वर्ड बहुत अधिक आमको एमती फिल हम कि 1200 वर्ड भी बहुत कम आम पाखे कंटेक्स्ट आसो आम पाखे कंटेंट आसो आम चूज करिया कि कौटा मत लिखार अच्छी कौटा मत छाड़ियार अच्छी आगुरी आमको कौन फिल होता कि आम पाखे किसी ना लिखापी फिलोसफी एसे मुझे बुझी पार नी मुझे कौन करी बट एवं आम पाखे एत सब डायमेंशन आसीगला आम इच डायमेंशन को जब डिस्क्राइब कर आम पाखे एत कंटेंट हो कि आम चूज करिया एटा मत लिखार अच्छी एटा मत छाड़ियार अच्छी फाइन देन यूज स्टोरीज एंड एग्जांपल्स सब बेले स्टोरी और एग्जांपल सहित ताको डिस्क्राइब करिवो मे बी सम हिस्टोरिकल इवेंट गांधीजी एग्जांपल तुम नहीं पार ना गांधीजी जो गांधीजी इंडिया को आसले दीटा ऑप्शन थिला सी इंडिपेंडेंस मुवमेंट रे भाग नहीं पारे अदरवाइज सी निजे एज ए लॉयर सी गोटे बढ़िया लाइफ बंची पार शुणु से लॉयर थिले तो तांका बाबा फादर वाज दीवान कंट्राक्ट भी थिला बढ़िया पोजीशन मिलता बढ़िया लाइफ बंची पारते बट ही चूज टू पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिकॉज तांको लगुला कि तांकर लाइफ रो एम होची दिस वन तांको लाइफ रो एम वाज टू अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट पीपल तांको पई जो संघ करिवा तांको पई लेटर लिखिवा तांको पई मैगजीन्स तैयारी करिवा दैट इज द एम ऑफ हिज लाइफ बट से चाहिए एज ए लॉयर से गोटे रॉयल लाइफ बंची पारते हाविंग एक्सपर्टीज इन आफ्रिका लंडन नु पढ़ी के आसले तो बढ़िया लाइफ बंची पारते बट ही चूज टू पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट देन फ्रीडम स्ट्रगल आम एग्जांपल नहीं पारिबा साइंटिफिक डिस्कवरी आम नहीं पारिबा केमिति साइंटिफिक डिस्कवरी बारंबार फेल होला परे सक्सेस आछी ओके बारंबार फेल होला परे सक्सेस जो आछी बारंबार फेल माने कोन रिस्क होउछ ना एटा कि सिविल सर्विस रे बारंबार जने 4 थर 5 थर फेल होला परे तांगु सफलता मिलुची फाइन देन एंटरप्रेन्योर्स एडमिनिस्ट्रेटर सोशल रिफॉर्मर ओडिशा एग्जांपल करंट अफेयर्स किसी भी तुम यादरू नहीं कि स्टोरीज एग्जांपल द्वारा तुम देखी पार सब नवा दरकार नहीं जोड़े तुमको लगुच सोशल रिफॉर्मर तुम ज्योतिबा फुले कथा नहीं पार महात्मा फुले जो आम कहते एग्जांपल तुम देखिपार बट ऑलवेज यू नीड टू कनेक्ट जहाँ एसर टॉपिक अच्छी ताकि तुमको कनेक्ट कर एणु तेणु लिखार ना केमिति लाइफटा जो फिलोसफिकल जो कोटेशन दिखाई जो स्टेटमेंट दिखाई ता सहित आमको रिलेट करिया पड़ो दैट इज द कंटेंट और दैट इज द कॉन्टेक्स्ट दैट वी शुड नॉट चेंज कॉन्टेक्स्ट को चेंज न करके आ भितर किसी भी तुम एग्जांपल लिखिपर एग्जांपल प्रूव दैट फिलोसफी इज नॉट मियरली एन आइडिया बट लिव्ड रियलिटी आम देखई पारिबा एथिरु कि जेमति असक्षम का कथा आम लिखिपर
से रिस्क नौथिले तांक बारे दीटा ऑप्शन थिला ना डॉक्टर खेमका दीटा ऑप्शन थिला तांक बारे कि से सरकार रो जहाँ भी इरेगुलारिटी होची ताको मान नेबे गोटे लग्जरियस लाइफ बंचिबे ना आ गोटे थिला कि सरकार रो इरेगुलारिटी को से बारंबार बारंबार लोकन को सामना को नहीं आसी तापे से पनिशमेंट पाइले पनिशमेंट पोस्टिंग है तांको जहाँ मिलिया कथा से सब मिललानी इवन तांका प्रमोशन ने भी डिलेज है प्रमोशन है भी नहीं तांको एम्पानलमेंट हो पारानी एबे जस्ट मु कहूँ दिस इज जस्ट लास्ट थर्सडे लास्ट वेडनेस हाँ लास्ट थर्सडे पाखापाखि गोटे जजमेंट आसला जो थे अशोक खेमका को माने कहगला कि तांकर जो पेंडिंग थिला 2021 रो एम्पानलमेंट तांक कराई नथला तो नाउ ही विल बी इक्विवेलेंट टू एन एम्पैनल्ड ऑफिसर जो पोस्ट गुड़ा बाहर एबे कि एम्पैनल होता ऑफिसर माने अप्लाई करि परिबे अशोक खेमका इज आल्सो एलिजिबल फॉर दैट तांको पनिशमेंट मिलथिला तांको सरकार चाहिलानी तांको प्रमोशन दवा पई बट सीए फिर भी डट के खड़े रहिले सी आईएएस कहीं बनते जदि सी कही मत सेफ रही अच्छी जहाँ सरकार कहला आखि बुझी से नहीं पारे बट से जानी कि मत ये मुझे आईएएस बनी मत आईएएस बनी लोक मान कम करने लोक मान कम करने माने इरेगुलारिटी मत बंद कर बिकज आई हैव पावर तो जदि सी करेंगे देन ही इज टेकिंग रिस्क बट से तो सी आईएएस होते ना सो इन दैट वे यू कैन कनेक्ट हाँ लिखला बेले तुम्हें बिल्कुल यहाँ लिखोनी कि गवर्नमेंट अपोज कला यहाँ अपोज कला योर वर्ड शुड बी एकेडमिक ठीक आ पार्टी विषय तो बिल्कुल भी लिखोनी दिस इज माय एडवाइस पार्टी विषय बिल्कुल भी लिखोनी ना तो कौन राजनेता ना तो पॉलिटिशियन तांको विषय बिल्कुल भी लिखोनी यू शुड अवॉइड एवरी टाइम यूजिंग दिस थिंग कौन राजनेता एडमिनिस्ट्रेटर तुम लिखिपर बट कौन पॉलिटिशियन कौन ये विषय लिखोनी पॉलिटिशियन तुम लिखिपर जमी जो मैंने माने डेथ हो गले इंदिरा गांधी हो गले नेहरू हो गले शास्त्री हो गले ठीक पटेल हो गले एम विषय आम लिखिपर ना दे आर लीडर्स विषय लिखिपर जो प्रेजेंट एक्टिव अच्छा पॉलिटिक्स से अवॉइड टू राइट देयर नेम्स पीएम को विषय तो ऑब्वियसली लिखिपर ना आम पीएम मोदी विषय तो आम लिखिपर राइट बिकज ऑफ हिज विजन जेहेतु बहुत सारा कार्यक्रम हो से इनिशिएटिव कर सो वी कैन राइट अबाउट हिम दैट इज नो डाउट बट माने लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गले कि अलग अलग लीडर हो गले ना लिखा जिते बंचो से तुम फायदा हम मेंटेन बैलेंस फिलोसॉफिकल एसे रिवार्ड मैच्योरिटी तुम केते मैच्योर अच्छो तुम केते बैलेंस वे रे एक्सप्रेस करछो ना कि तुम गोटे साइड को पूरा सपोर्ट करछो रिस्क नबार अच्छी केते रिस्क नबार अच्छी मुझे बारंबार कहूँ कैलकुलेटेड रिस्क बिना कैलकुलेट करके रिस्क यदि नौचंदी देन इट विल गोइंग टू हैम्पर आम गोटे बड़ पोजिशन अच्छा आ बहुत सारा रिस्क नौचंदी दैट इज नॉट कैलकुलेटेड बट सेमती कले कौन हम तुम रिस्क तो ना लोक मैंने सफर कले बट तार किसी फायदा ही होनी तो कैलकुलेटेड रिस्क आमको नबार अच्छी ना कि आमको इच्छा है रिस्क नबार तो आई विल टेक रिस्क नो कैलकुलेटेड रिस्क नबार अच्छी एंड दैट इज नथिंग बट बैलेंसिंग द इक्वेशन और balance or maintaining the balance okay maintaining the balance of both side risk भी नबार अच्छी बट कैलकुलेटेड रिस्क नबार अच्छी वाइल्ड रिस्क मत नबार ना अवॉइड एक्सट्रीम पोजिशंस बिल्कुल जमी मुझे कहली कि माने अन वाइल्ड गेस करमती आम बचार अच्छी एग्जांपल कौन विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको आम कौन कर डिस्कस कौन करिया इम्पोर्टेंस ऑफ पावर इट इज द कीवर्ड डेंजर्स ऑफ मिसयूज ऑफ पावर बारंबार यहाँ आम देखते ना आर्टिकल 356 बारंबार मिसयूज बाय द गवर्नमेंट इन बोथ द गवर्नमेंट जी भी सेंटर थे बहुत थर आर्टिकल 356 को मिसयूज कराई तापर है एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी आम माने एथिक्स को कनेक्ट करी आम रेस्पॉन्सिबिलिटी को आम केमी डिफाइन करिया और केमी आम लीडर रेस्पॉन्सिबिलिटी को आम डिफाइन करिया हाउ एथिकल द डिसीजंस आर सब बेले जजमेंटाल हवा कि सब बेले ऑब्जेक्टिव डिसीजन नवा दैट इज नॉट करेक्ट थिंग समटाइम यू नीड टू थिंक इट फ्रॉम एथिकल एंगल समटाइम यू नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स केवल
ऑब्जेक्टिव डिसीजन कि दिस कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, एटा यदि नहीं मु करिबिनी, देन यू आर डूइंग ऑब्जेक्टिव थिंग्स एंड दैट इज नॉट द रोल ऑफ ए ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट ऑफिसर। तापई एटा बिल्कुल भी रोल नुहे। से ऑब्जेक्टिव वे चिंता कर परिबनी। ऑब्जेक्टिव वे चिंता कला परे ताकू आउट ऑफ द बॉक्स चिंता करिया पड़िबो केमिति से लोक मानू हेल्प कर परिबो। इफ दैट इज ही इज डूइंग, देन ही इज टेकिंग एथिकल रिस्पांसिबिलिटी, ना हले नहीं। जेमति गोटे विडो आसले, ओके 60 इयर तांको एज हेलानी, तांको भाई घर नहीं, तो जो घर लिस्ट बनाला पंचायत रे, तो किसी डॉक्यूमेंट मगाला कि तुम आधार कार्ड थी दरकार, तुम पाखे माने राशन कार्ड थी दरकार, तुम भोटर आई कार्ड थी दरकार, तुम जमी बाड़ी पट्टा थी दरकार। बट से विडो पाखे 3टा डॉक्यूमेंट थिला, 4 नंबर डॉक्यूमेंट नथिला। तो तांको पंचायत कौन कला, पंचायत मना कला कला दे हेबनी घर। तो सी जाकि कलेक्टर पाखे पहुँचले कि मत एमती कथा है, मोर 3टा डॉक्यूमेंट अच्छी, 4 नंबर डॉक्यूमेंट नहीं एंड डेडलाइन सरीगला, मत घर मिलनी। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिसर अच्छी, कलेक्टर अच्छी, तो तापर 2टा ऑप्शन अच्छी। आइदर से चिंता करिवो कि यही फोर्थ जो ऑप्शनटा अच्छी सेटा को आम एडजस्ट करके घर दे पारिबा कि ना, यहाँ मैंडेटरी आ बिना हो पारिबनी, चिंता करिया पड़िबो। न तो सेमती कहबो नाई नाई ठीक अच्छे आपन पाखे डॉक्यूमेंट नहीं, आम घर दबुनु। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव डिसीजन। तो सी तो सेटा सेठी भी जानथिला कि घर मिललानी सीटी बिकॉज ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। बट एइथि कौन गोटे आइस बसिक सेठी ऑब्जेक्टिव डिसीजन जदि नबार अच्छी, ताले आमे गोटे एआई को बसई दवा ना। एआई कहे ठीक है तुम 4 रू 3टा अच्छी, ओके 3टा अच्छी माने तुम घर मिलबन, जाओ पळाओ। ताले आईएएस सेठी कहीं बसची, जने ओएस को कलेक्टर कहीं कराई। एटा से जदि करूची ऑब्जेक्टिव डिसीजन होची, ताले व्हाट अबाउट द एथिकल रिस्पांसिबिलिटी, सेटा को हमकु डिस्क्राइब करिया पड़िबो। देन वी नीड टू डिस्क्राइब अकाउंटेबिलिटी, द concept of accountability and how it is implies। then we need to link it with good governance। এই जो टॉपिक देथिला with great power comes great responsibility, ता ऊपर जदि हम कथा हबा एतिकी टॉपिक हमको डिस्कशन करिया पड़िबो। always 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 mention balance, because the balance discussion will fetch you good marks, fine। and always bring administrative perspective, because आमे aspire करचंदी ओएस होवा पई कि आईएएस होवा पई। so we should always bring administrative perspective। जो फिलोसफी जो माने कोटेशन देथिबो कि जो स्टेटमेंट देथिबो, how it is applied in administrative angle। remember that as you are writing for civil service essay, you should always ask one question: what lesson does this philosophy fetch or teach to an administrator, not fetch। এই ফিলোসফিটা গোটে আডমিনিস্ট্রেটর को कौन शिक्षा दउछ। द एग्जामिनर वांट टू सी एथिकल थिंकिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, जे सपोज टू बी एडमिनिस्ट्रेटर होबार अच्छी, तार एथिकल थिंकिंग अच्छी कि नहीं, तार लीडरशिप क्वालिटी अच्छी कि नहीं, से लीडरशिप है कि प्रोजेक्ट को लीड करि परिबो कि करि परिबोनी, whether he or she has compassion तार अच्छी कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी से नवा को रेडी अच्छी कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी शुड बी देयर, एंड नेशन बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। ना कि मते शॉर्ट टर्म गोल को फुलफिल करिया अछि, रादर आई शुड फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल ऑफन डिफरेंशिएट एवरेज कॉपी फ्रॉम हाई स्कोरिंग। एवरेज कॉपी 110, हाई स्कोरिंग 140। दिस विल डिस्कस एवरीथिंग। ये जो 30 मार्क तुम नहीं आसलो, दैट विल गिव यू ए रैंक। नॉर्मली लोक मैंने कौन करती, गोटे जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाऊँगी, नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम मेंस बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दिस एसे। नॉर्मली बहुत सारा टेस्ट सीरीज एमती करा जाए, दे इंक्लूड एसे एज एन एडिशनल सब्जेक्ट। ओके 2टा 4टा एग्जाम करिए भीतर गोटे एसे, फिर 4टा एग्जाम करिए भीतर गोटे एसे। नो, एसे इज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आर भी तो मार्क 250 अच्छे ना, आपको एते तुम नेग्लेक्ट कहीं कर। जदि एसे रु जने 140 रखिपर, दैट टू 8 to 10 days पढ़ी, आई विल सजेस्ट हिम टू फास्ट कंप्लीट एसे। तुम चिंता कल जीएस 1 रे, ठीक तुम चिंता कर जीएस 1 रे 140 रखा तुम केते दिन पढ़ा पड़ो, जीएस 1 रे 140 रखा गले तुम केते दिन पढ़ा पड़ो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये जो 80 दिन 90 दिन रहा तुम पाखे, तुम जीएस 1 पढ़ी 140, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
90 or 100 max. GS2 रे इट इज स्कोरिंग बट फिर भी वी कैंट गारंटी कि 140 तो मैंने बहुत बड़ा नंबर कि 120 130 दैट इज द रेंज. GS3 बिल्कुल जीवनी. GS3 100 क्रॉस करिया मुश्किल हो जाइए एंड GS4 दैट इज वेरी रैंडम जदि भी गला 120 130 मैक्स एथे तुमको 140 मिलूची आको तुम प्रॉपर टाइम दबो ना. GS1 90 100 रखा भी तुमको गोटे मिनिमम 30 दिन देवाक पड़ो आप भी तुमको GS2 रे भी मिनिमम गोटे 20 दिन दब. GS3 भी सेमती 20 डेज आप भी 20 डेज कि 25 डेज दब. ऑप्शन अच्छी ऑप्शनल अच्छी तुम पढ़ार अच्छी भी तो 30-40 दिन दब ना मिसेल ये 30 दिन चलो 30 दिन छाड़ टाइम नहीं 20 दिन तो दब ना. ये तुम 8-10 दिन में अधिक मार्क रखुच एंड यू आर जस्ट नेग्लेक्टेड आज इट इज माने ठीक अच्छे आम देखीदा ना देखनी चेंज योर स्ट्रेटेजी. तुमको मार्क दरकार तुमको देखा नहीं कौट मार्क आस तुमको मार्क आसा दरकार एंड बिलीव मी जस्ट गिव 8 to 10 days you will score 130 to 140 easy आराम तुम कर 130 to 140 मार्क. बिलीव मी इट इज माने जो भाई मार्किंग एवं हो इट इज वन ऑफ द यू कैन से कि माने मैक्सिमम स्कोर दैट यू आर फेचिंग एथर 145 अराउंड जाइए हाईएस्ट मार्क तो तुमको 8-10 दिन दवाक पड़ो एमती ना कि 4टा एग्जाम भितर गोटे दिन रिलैक्स होगी पढ़ीदेली सेमती हेनी. ठीक कम टू द टॉपिक राइट एंड ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन सब कंक्लूजन आम कौन रखा आम सब कंक्लूजन आम होपफुल हवा जहाँ भी मिस्टेक्स वगैरह हो जाए वी शुड रेक्टिफाई वी शुड कंस्ट्रक्टिव वी शुड फ्यूचर ओरिएंटेड फ्यूचर को देखिकी आम डिसीजन नवा ना कि एबेकार सर्ट टर्म गोल को फुलफिल करवा एंड सॉल्यूशन ड्रिवेन. देख जो तुम कंक्लूजन लिख नुआ किसी स्टार्ट कर नेवर स्टार्ट एनीथिंग न्यू नेवर स्टार्ट एनीथिंग न्यू बिल्कुल स्टार्ट कर तुम जहाँ लिखिच ता भितर सॉल्यूशन केमती तुम देल कंस्ट्रक्शन आइडिया केमी दौच फ्यूचर ओरिएंटेशन केमती रखुच कि होपफुल रोच सबू ता भितर कंक्लूड कर बट किसी नुआ आर्गुमेंट बिल्कुल स्टार्ट करनी कि यहाँ नो तुमको जो 2टा पैराग्राफ कि गोटे पैराग्राफ लिखार अच्छी यही 4टा जिनस ही करवा कथा एंड रे नेगेटिव बिल्कुल रखनी कि बहुत रिस्क न ना कि हेनी बिल्कुल एम सब नेगेटिव लिखार तुमको ना. लास्टली देयर इज सम फ्रेमवर्क लाइक डेप्थ फ्रेमवर्क फिलोसॉफिकल एसे जब तुम किसी मन पड़नी ताले ये भाया तुम लिखिपर. फास्ट डी स्टैंड फॉर डिकोड द स्टेटमेंट को आम जो देखले 3टा मीनिंग देखले तार एक्सप्लेन द कीवर्ड देन एक्सपांड इनटू डायमेंशंस सोशल डायमेंशन फैमिली डायमेंशन नेशनल डायमेंशन इंडिविजुअल डायमेंशन सब डायमेंशन तुम देखियो. प्रोवाइड एग्जांपल एंड स्टोरीज हिस्टोरिकल इवेंट हो पार लाइफ स्टोरीज हो पार देन ट्रांसफॉर्म फिलोसफी इनटू गवर्नेंस एंड रियल लाइफ से फिलोसफीटा को रियल लाइफ रे केमती आम यूज करमती आम एक्सप्लेन करिया कि रियल लाइफ रे तार केमती तार रिलेवेंस अच्छी. हाईलाइट होप एंड कंक्लूड पॉजिटिवली होप रखियो आ पॉजिटिवली ताको कंक्लूड करियो कि यस दिस कैन हैपन. ओके सो दीज आर सम ऑफ द वे टू राइट ए गुड एसे होप इट विल हेल्प यू आउ तुम मान को हेल्प करने वी हैव आल्सो इंक्लूडेड ए टोटल 40 एसे कंपाइलेशन 40टा एसे आम कंपाइलेशन करूँ 35 एसे है फिलोसॉफिकल बिकॉज फिलोसॉफी आसार चांसेस इज टू हाई 5टा आम ऑब्जेक्टिव रखीचु जदि ऑब्जेक्टिव आसीगला देन आल्सो यू कैन मैनेज 40 एसे अच्छी. फास्ट है जमी फॉरेस्ट आर बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट इट इज नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ड फॉर. मैक्सिमम आम कौन नहीं मैक्सिमम आम यूपीएससी रो क्वेश्चन आम उठेचु यूपीएससी क्वेश्चन नहीं किसी ओपीएससी रो क्वेश्चन नहीं जमी तुम ये देखिपर लास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रीडम इज mere absence of restraint gender is a social construct visibility is mistaken for value injustice anywhere is threat to justice everywhere sun is new each day ये किसी नहीं एंड यही जो 10टा रहा दैट इज कम्प्लीटली न्यू एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आदि किसी गोटे क्वेश्चन आसपे. आइडियाज आर मोर पावरफुल दैन वेपन एवरी राइट इम्प्लाइज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट किसी किसी अच्छी ओपीएससी सॉरी यूपीएससी क्वेश्चन अच्छी बट स्टिल आम चेष्टा करूँ कि मिनिमम 10टा खंड एमती क्वेश्चन रो जोटा कि आस न. ए सोसाइटी ग्रोज व्हेन ओल्ड मेन प्लांट ट्रीज हुज सेड दे नो दे शैल नेवर सिट इन
Simplicity is ultimate sophistication. এটা 50 আছে already. Life is long if you know how to use it. Dreams are not what you see in sleep. Dreams are things that do not let you sleep. APJ Abdul Kalam. Right? तो आमे एटा तो रहिला केमति तुम एसे लिखियो तापर आमे टोटल 35 एसे विदिन 1200 to 1300 वर्ड भीतर आमे लिखि सब एसे गुडा फॉरेस्टर बेस्ड केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस एटा गोटे हला ठीक नेक्स्ट तुम आसो एसीपी इन हार्बर वाला जोटा आम डिस्कसन करते तापर तुम आसो कौन तापर आसो तुम करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव टू की टू सक्सेस एटा भी यूपीएससी क्वेश्चन ठीक सबू एसे आम एमती लिखीचु सो विजडम फाइंड्स ट्रुथ इन दिस वे वी हैव टोटल 35 एसे ये फिलोसॉफिकल पांचटा तुम ऑब्जेक्टिव एसे एंड इफ यू वांट टू परचेज आवर एसे ओनली ठीक तुम्हें जो चाहब आमर ओपीएससी रो मेंस टेस्ट सीरीज एबे एसे चली फ्रॉम 24th of June विल स्टार्ट विथ GS2 तापर GS4 देन GS3 एंड लास्ट विल गो टू GS1 एसे रो हम स्टार्ट करी GS1 पर्यंत जीवु सो बर्तमान एसे चलची एसे रो ऑब्जेक्टिव एसे इज कंप्लीटेड फर्स्ट एसे ऑन this okay philosophical essay will come tomorrow चार्टा तुम टेस्ट रहिबो फाइन इफ यू वांट टू जॉइन आवर मेंस टेस्ट सीरीज तीनटा आम रखीचु गोटे हला बेसिक जोटार कॉस्ट आम रखीचु 5999 ताजे तुमको 28टा टेस्ट मिलिबो आउ 28 टेस्ट प्लस मॉडल आंसर तापर आम गोटे रखीचु नेक्स्ट प्लान गोटे प्रीमियम वाला प्लान अच्छी एटा 7999 इतने तुमको 36 टेस्ट प्लस स्टडी मटेरियल पूरा एंटायर जीएस 1 2 3 4 एसे सब मिल एंड द लास्ट वन इज प्रीमियम प्लस जोटा है 9999 इतने तुमको 36 टेस्ट प्लस स्टडी मटेरियल प्लस फ्यू लेक्चर्स प्लस वैल्यू एडेड मटेरियल आउ गाइडेंस फाइन तो 3टा टेस्ट सीरीज अच्छी सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट तुमको 28टा टेस्ट दरकार 36 दरकार यू कैन जॉइन आउ आम 4टा टेस्ट रखीचु ओडिया आउ इंग्लिश दीटा ओडिया दीटा आउ इंग्लिश दीटा बिकज एथर बहुत पिला ओडिया इंग्लिश से भी फेल होते सो टू हेल्प देम आम दीटा टेस्ट रखीचु ओडिया दीटा टेस्ट आउ इंग्लिश दीटा टेस्ट दैट इज ऑल्सो फ्री एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय ओनली द एसे 40 एसे कंपाइलेशन द कॉस्ट इज 500 रुपीज ओके 500 टका 40टा से गोटे से ऑलमोस्ट 10 रुपीज 12 रुपीज सो यू कैन परचेस टू जॉइन आवर कोर्स और टू परचेस यू कैन व्हाट्सएप और टेलीग्राम रे मेसेज कर परिबो और यू कैन कॉल ऑन 7989778247 फाइन so and also we have started one PYQ डिस्कसन आम PYQ डिस्कसन वीडियो ए स्टार्ट करचु 2024 नहीं कि 2022 सबू GS 1 नहीं कि GS 4 ओके फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज OPSC Achievers Academy ठीक से तुम यूट्यूब रे मिलिबो सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉर परचेज एनी कोर्स और टू जॉइन टू आवर टेस्ट सीरीज you can call or message on this number okay I am writing it here another time 7989778247 thanks for watching the lecture have a great day